अब तुम बोल सकती हो same thing Yes. that we were talking about. So as I was saying कि I was preparing for CSE. तो जब मैं यहाँ आई तो schedule was very tight and different and हमारी classes different departments में होती है. So I was missing a part of my personality, an exponent of my personality which was not evolved. So even let's just next day of our midterms हमें presentation submit करनी थी. So I actually liked it a way. I liked it very much because I wanted to evolve my personality in a way. इतने लोग हैं यहाँ पे, even if we greet each one of them, we will learn something new. There are so diverse departments and diverse people here. So अच्छा, this is वो an मुझे excellent वो opportunity. वाली बात याद आई कि जब हम प्रिपेयर करा रहे थे तुम्हें फॉर द इंटरव्यूज एंड टेस्ट, तो बात ये हो रही थी कि यूपीएससी का प्रिपरेशन तुम्हें क्या देता है। तो Yeah. डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, आई यूज्ड टू मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था कि नहीं, मतलब देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम योर यूपीएससी प्रिपरेशन, है Yeah. ना। लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स still can't give you the capability growth that can happen in these campuses and these programs, nahi? So Agree. you work in team, you work to explore the opportunity. It's not just what is Hmm. there in the textbook, what it could be. हाँ, हम लोग Yes, को भी sir. याद है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट कैन हैपन बाय द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये नहीं, what we Yes, can sir. literally achieve through mixing Yes, sir. economics with real life, and also we used to study behavioral patterns, so that Hmm. how human being can get मतलब like involved in the process of management and policy. तो ये सब चीजें एक्सप्लोर करने को मिलता है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू एलिजिबल टू गेट गुड जॉब अहेड। तो True, sir. हाँ, तो हम लोग थोड़ा इसी तीन डायरेक्शन में बात करेंगे। वन दैट हाउ डिड यू फाइंड दिस अल्टरनेटिव Hmm. फॉर योर यूपीएससी Hmm. प्रिपरेशन। Yes. तो कहने को लोगों के दिमाग में ये होता है कि यूपीएससी करके तो आप चलो क्लास वन ऑफिसर बनते हो, एंड यू Hmm. गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। So, Hmm. if you are not going there and coming to this course, so how good is this option for an UPSC aspirant? इस पे हम बात करेंगे। Hmm. सेकंड जो हमारी वो है ऑब्जेक्टिव है दैट व्हाट इज योर प्रोग्राम, स्पेशली तुम अपने इंस्टीट्यूशन को फोकस करके बताओगे, व्हाट व्हाट आर यू लर्निंग इन आईआईटी खड़गपुर एंड in this program. And third, of course, since I'm from Smarg, I'll be also asking that what was your preparation experience Of at course. Smarg. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि तुम्हें कितना डिफरेंस फील होता है व्हेन यू केम हियर फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड डू यू फील दैट यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉम द चॉइस of being an IAS officer or IPS officer to this as an policy graduate, where you don't know exactly where we'll be working ahead. Yeah. But is there any compromise that you are feeling? Okay. So to answer this question, the reason I started preparing for UPSC was not for a societal status or any social status which I'll get, authority I'll get. I started because I wanted to work for societal impact, for social impact, and how I can, with my attributes, I can work at grassroots levels of society. So, sir, the reason I gave my 100% to UPSC preparation, and I began realizing that I'm not able to give that much which I could have if I were at different place. So, after giving my 100% there, I decided to work for to work in some other direction, but work with the same intent. And public policy in India is rising. The government is aspiring and seeking more public policy experts. So therefore, I decided to switch my career, not in direction of giving an examination and clearing it and having a designation, but by becoming and by undergoing a professional training of becoming a policy expert. And so this is a better option because I am evolving and exploring myself in every dimension and every direction. Also, I am becoming a a policy expert जो कि secretary level of IAS officers का work होता है, where there are also not have not been trained for policy expertise. उनका role इतने साल का ऐसा होता है कि they
they began understanding the role of government and governance in our country. So, sir, हम लोग, um, I wanted to have an excellence to a greater extent, and I think I am on that very path of becoming an excelled policy expert. And I hope in some years down, after also working in this direction, I can become a policy expert. तो सर मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया IAS ऐसे भी officer और this UPSC course actually center. gives you a lot of dimensions to Yes, think and sir. work, Yes, sir. and your intellectual growth is never compromised here. It's Mhm. as per any as matlab, like you can just think of any profession of world which has or which has been counted as most intellectual profession. You can put public Hmm. policy expert at to that level also, because Yes, sir. so every time when I say that how do we compare from MBA from a public policy, तो ऑफ कोर्स एमबीए की थोड़ी इंडस्ट्री एफिनिटी ज्यादा है। अभी मार्केट में एमबीए ग्रेजुएट्स आर हाईली एक्सेप्टेड विद गुड फिगर और गुड सैलरी, but the work, the challenge, the intent of public policy is much more than a management program. Yes, sir. Like if you are working in a company and you are going to market a particular product from that company, your market size is very small, and Hmm. here your market size can be the entire population, and Yes, that sir. too they are not well read or aware. So it's Hmm. not just bringing any policy; it's also involving people to that policy, Hmm. Yes, and sir. with the governance structure which is already there in India, where we are not crafting the structure also. So Hmm. it's a big challenge. True. इंटेलेक्चुअली तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है। बिल्कुल, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर इशू पे या ऑलरेडी गोइंग इशू पे पॉलिसी पे वी कैन हैव अ रिसर्च पेपर, हमारी ओपिनियन हम लोग जनरेट कर सकते हैं जो कि इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इस इंस्टीट्यूशन से बैठ के भी। सो हियर वी आर लर्निंग एंड हैविंग एन environment where we can discuss and also give our input from through papers also. चलो ठीक है, फिर इसी में यू कैन ऐड कि द प्रोग्राम हियर एट IIT Kharagpur, Yes, sir. and what, since this is the first batch, so how they are doing and how they are bringing the things to you. Is do you do you guys find any like unstructured Hmm. thing there, or is it good, or you can just talk about your program Yes, like that. sir. Yes, sir. So, under IIT Kharagpur, there is a separate school which is named as Center of Excellence in Public Policy, Law and Governance. And this is a unique amalgamation of public policy, the legal compliances, that is a law, and the governance model of India. So, classes here, so they have made the course, and they have also inculcated management course, like for example, statistics we have business economics, and further we might be having financial management as well. So they have made every possible effort to bring out a course which can satisfy the demand and requirement of um a range of field across, not only across India, but also across nation. Because public policy, we are also having public international, we are also learning public international law this semester. So our classes are across departments, and we are a very small cohort, and our faculty advisors, every teacher's response and their concentration on us is more. They are making us they are making us read much more, not only which is limited to this course, but also apart from this course. Like we are supposed to give published papers in every subject. We are supposed to have a particular seminar, and which we are trained in a way कि हम लोग proper issue को recognize कर पाए. What is the issue? What is the gray area? And even our classes in subjects such as regulatory governance is such that it is not only theoretical, but we are being asked in it is an open platform, like the way we are discussing what are pros, what are cons, what if I क्या ये aspect हो सकता था या aspect नहीं हो सकता था. So I am, to be honest, enjoying it a lot, and they have made every bit of effort
कि ये कोर्स को this course I think will be a success because I don't think there is any stone unturned. Okay. So So, कितना टाइम हो गया तुम्हें ज्वाइन किए हुए? It's like 1.5 months ना? हाँ, almost 2 months. 2nd October तो को मैं 2 month मैं हो जाए. तुम्हें एक अपनी बात बताता हूँ. So whenever like we have been training students for such programs since like 2017. और जब भी कोई बच्चा जब तक हमारे पास होता है ना, तो हमें बहुत अथॉरिटी फील होती है उस पे कि उसको डांट देते हैं. एंड भी मतलब मुझे लगता है कि एक दिन के बाद में 50 गलतियां मैं निकाल सकता हूँ किसी स्टूडेंट्स हाँ के सर. कम्युनिकेशन से. लेकिन जैसे जैसे तुम कॉलेज जाते हो ना, एंड जस्ट आफ्टर 2-3 months यू guys बिकम वेरी मैच्योर. मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंस्टीट्यूशन जैसे टेस्ट है, आईआईटी है, इनका जो ओवरऑल पेडागोगी है, इन्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, इट्स वेरी गुड. And I cannot be at par with these institutions at all because 3-4 महीने में ही they make you like someone जिससे कि आप बात करके खुश हो सकते हो कि जैसे एक कंटेंट मिल रहा है. तो जितना आराम से हम तुम्हें डांट देते थे, लाइक तुम्हें ही नहीं और भी बच्चों को, 2-3 महीने बाद ही बहुत फर्क पड़ जाता है. एंड विद टाइम मतलब जब आप कोर्स पूरा करोगे देन यू विल बी लिटरली एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड. तो तुम्हें फिर जब याद आएगा, आई थिंक कि एडमिशन के टाइम हम क्या डिस्कस करते थे, तुम्हें लगता था होगा कि क्या फिर ये तो बच्चों वाली बात थी. तो बट स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा ज्यादा ही हुआ. अभी से ही तुम्हें बच्चों वाली बात लगने लगती है. नहीं नहीं सर, आप हम लोग जब एडमिशन के टाइम डिस्कस करते थे तब तो आई वॉज वेरी हियर एंड देयर हियर एंड देयर हाँ, इन माय ये सबके साथ, इट्स थॉट. नॉट अबाउट यू ओनली, क्योंकि पता है क्या, ये जो सिंक होता है ना कि थॉट को डायरेक्शन मिलना. हाँ बिकॉज एज जी. एन स्टूडेंट ना वी ऑलवेज थिंक ऑफ बीइंग गुड इमेज, मतलब क्रिएटिंग गुड इमेज. तो उसी कंसर्न में हम क्या करते हैं, खूब सारा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं बातचीत में. हम्म. कुछ यहाँ से बोल दिया, कुछ यहाँ से बोल दिया, आपको लगता है इट्स एवरीथिंग अबाउट अबाउट गेटिंग मार्क्स, है ना. चाहे हम हम्म. इंटरव्यू ले रहे हो या फिर आप कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हो, तो आपको लगता है कि सामने वाले की ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन योर ओन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट और डायरेक्शन. तो ट्रू अब सर. कॉलेज में आके आपको पता चलता होगा कि पहले कोई भी फैक्ट या कोई भी रीजनिंग आप दे रहे हो वो आपके थ्रू पास होनी चाहिए, देन इट शुड गो हाँ. टू द प्रोफेसर. तो अब वो हम्म. सेल्फ चेक लगता है ना, तो लॉट ऑफ थिंग गेट्स बेटर, है ना. ट्रू. और फिर व्हेन यू नो कि इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ब्रिंगिंग टू मच थिंग ऑन अ प्लेट, इट्स अबाउट हाँ. क्रिएटिंग व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, है ना. तो यस सर. वो अच्छा रहता है. चलो ये इसी बात पे हम लोग प्रिपरेशन वाली बात करते हैं. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट स्मार्ग, like what was your journey and how did you feel or you got helped through us? So everything is my honest review, and the same goes for this question is that it won't have been possible if I were not at Smarg. And this is a very genuine and honest opinion because when I came, I had no experience, much experience in work. I was preparing for CSE throughout. मेरे पास और कोई just after graduation I started preparing for CSE. So it was very difficult for me to navigate what to do next. And when I came across Smargs and when I joined, the way I used to read articles and research papers before, it completely changed when we were discussing. Because आप हमेशा एक बात बोलते हो कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करना नहीं जानते. एंड मैंने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करना सीखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम जितना भी जीडी और सब में पार्ट रहते थे, your major focus was never on how much information and how much of factual information we can give you, but your major focus was always upon the comprehensive material and substantiated information and knowledge, particularly knowledge which the paper or the article was is giving, and which is being second thing which I learned is कि question की demand क्या है from what you are asking, because for example the possible outcomes पे हम बहुत बात करते थे interview preparation पे, possible outcomes of the course. So our our words were always here and there, but हम लोग ने वो frame करना to the point तब सीखा
जब आपने हमें इतना ट्रेन किया कि सी व्हाट दे आर आस्किंग, दिस इज द डिमांड ऑफ द कोर्स, दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्स. सो सर, टू बी ऑनेस्ट, इतना वो मैं आज भी अप्लाई करती हूँ. थर्ड इज कि आपने पब्लिक पॉलिसी पे इतना कुछ कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ योर वीडियोस. एंड बहुत चीजें आज भी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे थ्योरी में, एकेडमिक्स में, वो मैं अप्लाई कर रही होती हूँ, लाइक द लीगल कंप्लायंसेस, अडॉप्शन पार्ट इन द पॉलिसी, हाउ इट इज अडॉप्टेड इन आवर कंट्री लाइक इंडिया. वो थोड़ा स्केलेटन सा रेडी हो जाता है ना, तो फीडिंग द हाँ सर. इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी देयर. यस वरना सर. फिर सो आपको लगता है कि कभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं. कभी So कुछ now पढ़ it, रहे हैं. और हाँ, तो जब एक बार स्केलेटन तैयार हो जाता है तो यू कैन जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन एट द राइट प्लेस. तो कहीं भी क्लास में डिस्कशन हो रही और हो सब प्रेपर. तो अपने आप ही वो जगह पे हाँ जाने सर, लगता तो वो याद आता है कि है. याद आता है कि ये भी जीडी में कभी डिस्कस किया था, या ये भी अच्छा. इंटरव्यू में. और प्रॉपर्ली पब्लिक पॉलिसी एट आईआईटी खड़गपुर की, if I'll talk, तो there are 3 stages. One is return stage, return essay writing, essay writing and article writing is there. Second is GD and third is interview. So at Smarg, I undergone various practice papers. There is a very comprehensive booklet and questions which sir has specifically designed for writing practice. And if you do that and if you get it checked by sir, I think our work is done. And with this we can substantiate and uh, add some points which are already going in news and going around in news, which are common. GD sir also conducts GD in the classroom, and I've applied sir's guidances. I think मुझे ज्यादा points उन guidances के मिले थे जो sir ने आपने मुझे advise किए थे, that if somebody is not able to speak, you must be calling their name and asking them to speak. I did that. I was able to keep the GD to the बस topic. बस इससे ज्यादा तारीफ मैं नहीं सुनूंगा. अब मुझे ये बताओ. It was genuine. चलो. अब मुझे ये बताओ कि जैसे जो तुम्हारा कोर्स है और कलीग, मतलब एनवायरनमेंट दैट यू हैव, हम्म, उसके बारे में थोड़ा बताओ. जैसे कई बार लोग ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन को जज करते हैं या फिर कोर्स को जज करते हैं या सिर्फ प्लेसमेंट को जज करते हैं. हम्म, So the community learning that we have in our post graduation हम्म. program, that is also very important. Yes. So talk about that अगर तुम्हें कुछ चीज बतानी हो तो. So even if I'm talk about my cohort, so it is a diverse cohort. There are engineers, there are lawyers, कोई elementary education से भी हैं. There's a one student who was masters and was doing PhD in physics, and then she switched her career to public policy. So even in small batch we have a diverse field. And when it comes to Kharagpur, so there are various departments. That there's department of happiness as well. And a PhD say I was interacting, and I got to know that how happiness in the work and happiness culture in work environment is necessary. The जो यहाँ पे क्लब्स हैं वो इतना डाइवर्स काम ऑलरेडी कर रहे हैं कि like they are mapping and monitoring the trees in the campus, and how in future and how past they got degraded due to pollution. So ये थोड़ा community level का अभी तक जितना मैंने explore किया है वो है. और प्लेसमेंट काउंट्स और इन सब से ही आई हैव इंटरेक्टेड मोर. ऑल्सो हम लोग के डिपार्टमेंट की क्लासेस आर हेल्ड विद VG Zone, which is a management school here, and also humanity, MHRM is human resource management course. तो हम लोग की इन लोग के साथ भी क्लासेस लगती है. सो वी गेट टू नो अ लॉट एंड वी लर्न अ लॉट कि उनके कोर्स में क्या है, and what their course is demanding, and what are possible outcomes of their course. So अभी तक मेरा इतना इंटरेक्शन हो पाया है, not much. ओके पीयूसी, बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी और तुम्हारे बैच वाले लोगों को भी, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन को भी. एंड basically it's not my job to thank IIT, but I literally feel thankful to all these institutions who are able to craft such a very
applied course or course which actually preparing students for greater goods or social benefits. At the same time, they are also taking care of employability. So Yes, there sir. used to be a time जब ऐसे कोर्स बनते थे तो largely वो thought process oriented होते थे, not in terms of Hmm. capability development. But Hmm. IIT Delhi or even IIT Kharagpur, all these IITs are bringing such course. So as a society member or as a civil society member, you can say we should be thankful for these institutions, and we are Hmm. expecting good quality of teaching and research and training, so that students should not think that there is nothing to replace UPSC or there is nothing to replace government job. है ना, ऐसा ऐसा True. होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में व्हेन आई सी people are struggling for being IS being IS or civil servant, they मतलब lot of them are even losing their life अगर recent times के events Hmm. को देखा जाए तो. So that particular thing is not worth. Of course ठीक है, आप civil servant बन जाते हो, but again uh, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत है. एटलीस्ट जिनका हाँ नहीं सर. होता उनके लिए तो बहुत है, जिनका हो गया तो चलो ठीक है. Yes. And a lot of people True. are struggling there. So all these True. courses will bring a new hope for people who wish to work for society at the society level, है ना. Yes, sir. और तो उनके लिए बहुत अच्छा है. And we should be encouraging IITs or other institutions that they are bringing such good Course. courses. Yes, sir. And they are also even able to sell these to corporates and other Hmm. institutions where they can be had. तो ये Yes, बहुत sir. अच्छी बात है. चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग तो बंद कर रहा हूँ, बट यू विल स्टे, तो कुछ आपस वाली बात भी करेंगे. हाँ सर.